Hello and Jai Hind once again. Dear friends, in today's lecture we are going to learn about the second lesson of your syllabus, that is thief story. And you know that the story has been written by Ruskin Bond. This is a very simple story, and it is a simple and heartwarming story about a small time thief and the man he robs. And in this lesson, we're going to see what happened to that man later on and what happened to the thief after that. So, this is a simple and a plain story, but really touching story. Before we learn the lesson, let's see something about our writer, that is Ruskin Bond. Ruskin Bond, he is an Indian author, but he was from British origin. He is, in fact, from British origin. He was born in the year 1934 and he is still living in India. He is famous for his writing related to children, and he has written the books like The Blue Umbrella, The Room on the Roof, and he has been awarded with so many awards like Padma Bhushan, Padma Shri, such awards he is honored with. So in this story he will come to know the style, the way in which he writes his stories. So let's see the story line by line. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Now in the first paragraph itself you'll come to know something. First thing, the story has been written in first person. यहाँ पे बोलने वाला खुद अपने बारे में बता रहा है. That's why I is used here. और I was still a thief, मतलब बोलने वाला चोर है. उस वक्त भी वो चोरी कर रहा था. And though only 15, his age was 15. This is something we come to know here. I was an experienced and fairly successful hand. Fairly, at the age of 15 itself, he was successful. And he was experienced, means he started his stealing long ago. Means तभी भी वो experienced था, and fairly successful hand. His success rate was good. Anil was watching a wrestling match when I approached him. So in the first paragraph itself, we have one more character, that is Anil. So they met during a wrestling match when I approached him. He was about 25. A tall, lean fellow. You can note the appearance of Anil. He was tall and lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. He was kind. He looked kind, easygoing, means a little bit careless person, and simple enough for my purpose. My purpose. What is the meaning of my purpose? His purpose was to rob him. His purpose was to fool him. And simple people can be easily fooled. So he thought that he was an easy target for him. I hadn't had much luck of late, and thought I might be able to get into a young man's confidence. So he hadn't had much luck of late. Of late का मतलब होता है recently, lately. पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा कुछ उसको success नहीं मिला था, and thought I might be able to get into. It is a phrase, to get into. Means to involve in the young man's confidence. तो ऐसा लगा कि वो easily अनिल का confidence जीत पाएगा और उसके बाद उसको easily वो लूट पाएगा. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. Now by this sentence you can devise that this person, I, जो अभी तक नाम नहीं बताया है, ये जो है ये एक्सपीरियंस है. क्योंकि सबसे पहले व्हाट ही सेज, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, मतलब तुम एक रेसलर के जैसे दिखते हो. इन द अर्लियर लाइन्स वी हैव नोटिस दैट ही ऑलरेडी टोल्ड दैट ही वाज अ लीन पर्सन. वो एक लीन था, दुबला पतला था, लेकिन अब बोलते हैं कि तुम रेसलर दिखते हो. एंड द रीजन ही इमीडिएटली मेंशंस हियर दैट अ लिटिल फ्लैटरी मतलब इनसिंसियर प्रेज, किसी की झूठी तारीफ करना, किसी को झूठा अच्छा बोलना. तो वो कहता है कि फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. मीन्स व्हेन यू फ्लैटर
अगर किसी की आप तारीफ करते हो तो आप उससे अच्छा दोस्ती कर सकते हो. If you flatter to someone, that person will become your friend because you will immediately go in the good books of that person. So do you, he replied, which put me off for a moment. Now, what was the reply of Anil? Anil immediately replied, so do you. मतलब तुम भी तो एक wrestler लगते हो. And because of his reply, which put me off means to lose interest or dishearten. मतलब because of the response of Anil, he was disheartened. वो परेशान हो गया. वो थोड़ा सा उसको लगा कि अब थोड़ा सा काम मुश्किल है. Okay? For a moment, because at that time I was rather thin. And why he was put off? Why he was disheartened? The reason is, at that time he was a thin person. और वो थिन होने के बावजूद भी अनिल ने उसको बोला कि तुम भी रेसलर दिखते हो. Now what is the point here? You notice that जो जजमेंट उस लड़के ने, चोर ने, अनिल का लगाया था कि एक सिंपल आदमी है, आसानी से इसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं. अनिल ने जो जवाब दिया कि तुम भी एक रेसलर दिखते हो, तो उसको लगा कि ये भी आदमी उतना सिंपल नहीं जितना समझते हैं, इसको बेवकूफ़ बनाना उतना आसान नहीं है, ऐसा उसको लगा. एंड दैट्स व्हाई ही वाज डिसहार्टेंड. Means his judgment about Anil was somewhat proving wrong at that time. That's why he was disheartened. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. Modestly मतलब without boasting. मतलब एकदम सिंपल तरीके से कहा, I do wrestle a bit. हाँ, मैं थोड़ा सा wrestling करता हूँ. लड़का भी चालू था. He knew what to answer. What is your name? Anil asked. Hari Singh. I lied. Stealing is closely associated with lying. तो आपको समझ में आएगी बहुत सारा झूठ बोल रहा है. And in the whole story, we are taking into consideration the name of this person as Hari Singh. लेकिन इसने पहले बोला है कि वो झूठ था. That was not his real name. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. So this sentence tells us something about the character of this person whom we are going to call as Hari Singh. तो Hari Singh took a new name every month. हर महीने एक नया नाम लेता था. मतलब वो चोरी के फील्ड में माहिर था. That kept me ahead of the police. So पुलिस से बच के रह सकता था. And my former employees means his way of stealing was this way most of the time. क्योंकि किसी के पास जाता था, उसके पास जॉब करता था, उसको लूटता था और उसके बाद फिर वहाँ से 9-2-11 हो जाता था. और नाम बदलने की वजह से उसके पुराने एम्प्लॉयज़ को पता नहीं चलता था कि ये कहाँ पे है. दिस वॉज इज मोडस ऑपरेंडी जिसको हम बोलते हैं. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. So ऐसा उनका इंट्रोडक्शन हो गया. अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स. वेल ऑयल्ड, दिस वर्ड इज important because this is a compound word and this is compound adjective. Two words brought together used as an adjective. They are called as compound adjective. तो ये compound adjective है. well oiled wrestlers who were grunting. Grunting is a onomatopoeic word making low guttural sound. अपने गले से आवाज निकालना. दे वेर ग्रंटिंग, पुशिंग हार्ड, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर. तो उसके बारे में अनिल बात कर रहा था. आई डिडंट हैव मच टू से. अनिल वॉक्ड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. उसके पीछे पीछे वो चला गया. हेलो अगेन, ही सेड. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. अपीलिंग मतलब वेरी अट्रैक्टिव, अटेंशन गेटिंग स्माइल. उसने एक बहुत ही अपीलिंग स्माइल दिया. I want to work for you, I said. तो उसने अनिल को बोला, I want to work for you, but I can't pay you, was Anil's reply. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. So he thought that over for a minute. थोड़ा उसके बारे में सोचा. जब उसने कहा कि I can't pay you, so he thought that he had misjudged my man. Means he was thinking of robbing Anil, thinking that he was a rich person. तो उसके पास बहुत कुछ मिलेगा. लेकिन जब अनिल ने कहा कि I can't pay you, तब उसको उसके डिसीजन पे सोचना पड़ा. He had to rethink.
क्योंकि उसको लगा कि ये आदमी के अगर मुझे पे नहीं कर सकता तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, और उसके पास पैसे अगर नहीं हैं तो डेफिनेटली मैं इसकी चोरी करके, इसके पास काम करके शायद मेरा टाइम बर्बाद करूंगा. तो ही हैड टू रीथिंक ऑन हिज डिसीजन. Can you feed me? I asked. Then Hari Singh asked Anil, can you feed me? In response, Anil asked, can you cook? Then Hari Singh said, I can cook. I lied again. वो फिर से झूठ बोलता है कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ. If you can cook, then maybe I can feed you. Anil assured him, खाना पका सकते हो तो मैं तुमको कुछ दे सकता हूँ या खिला सकता हूँ, तुम मेरे साथ रह सकते हो. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. So where was his house located? Anil's house. It was at over the Jamna sweet shop and told me I could sleep in the balcony. But the meal I cooked at night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. तो उसने उस दिन खाना पकाया और वो खाना इतना ख़राब था कि उसको खाना पकाना आता ही नहीं था. तो डेफिनेटली उसने जो पकाया अनिल को पसंद नहीं आया और अनिल ने वो कुत्ते को खिला दिया और बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ. लीव फ्रॉम हियर. बी ऑफ. बी ऑफ मीन्स गो अवे फ्रॉम हियर. तो अनिल ने उसको काम से निकाल दिया. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड यू कुडंट हेल्प लाफिंग. तो उसने उसकी वो टिपिकल सिग्नेचर स्माइल दी. स्माइल्ड इन मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. और इसकी वजह से अनिल अपनी हंसी रोक नहीं पाया. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड, नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक. देन ही सेड, पैटेड ऑन द हेड. ऑन द हेड. तो द हेड, the is used here in place of the possessive adjective. We have already learned about this in articles. So he patted me on the head. My की जगह पे the use किया है and said, never mind, he would teach me to cook. तो उसने बोला कि मैं तुमको खाना पकाना भी सिखाऊंगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. So Anil decided to teach him. What were the things he taught? Anil taught how to write his name and how to write the whole sentence and also mathematics, that is adding numbers. I was grateful. Grateful. The meaning of grateful is thankful. Grateful is an adjective. Now, so many students do mistake in this word grateful. Many times they write G-R-E-A-T, great, और उसको एफ-यू-एल लगाते हैं ग्रेटफुल, मतलब ए पर्सन इज़ वेरी ग्रेटफुल, बहुत बड़ा ऐसा लिखा जाता है. बट एक्चुअली ग्रेट इट सेल्फ इज़ एन एडजेक्टिव. उसको फिर से एफ-यू-एल नहीं लगा सकते हैं आप. सो वो खुद ही एडजेक्टिव है. यहाँ पे ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल. ये वर्ड ग्रेटिट्यूड से आया है. ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस. ग्रेटफुल का नाउन फॉर्म है ग्रेटिट्यूड. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. Then he thought, अगर वो पढ़ना लिखना सीखेगा तो there will be no limit for his learning. वो बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा उसको लगा. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supply. He would go in the market to buy supply, usually making a profit of about ₹1 a day. एक दिन में ₹1 प्रॉफिट करता था, मतलब वो बचा के रखता था. इन शॉर्ट वो चुराता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. अनिल, उसकी तरफ अनिल ने ध्यान नहीं दिया, तो ज़्यादा उसने उसके बारे में सोचा नहीं कि ठीक है पैसा कमाता है तो कमाने दो. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इज अ फ्रेज. इन अ शॉर्ट इरेगुलर intervals, in a short irregular way वो पैसे कमाता था. He would borrow one week. Borrow means किसी से उधार लेना and lend the next, और दूसरे हफ्ते किसी को उधार देता था. तो कभी उसके पास इतने पैसे होते थे कि he used to give the money to somebody as help,
and sometimes he ran out of money in such a way that he had to borrow the money. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived he would go out and celebrate. तो वो बाहर जाता था, सेलिब्रेट करता था, जैसे पैसे मिलते थे और पैसे तुरंत ख़त्म करता था. मीन्स ही वॉज अ केयरलेस पर्सन एज पर स्पेंडिंग ऑफ मनी इज कंसर्न. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग. तो पैसे कैसे कमाता था? व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? ही रोट फॉर मैगजीन्स के लिए लिखता था. एंड अर्निंग मनी इन दैट वे, the writer considers, the boy, the thief, Hari Singh considers that it was a queer मतलब strange way to make a living. मतलब पैसे कमाने का अजीब तरीका है. वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि उसको कभी इस तरह के लोग नहीं मिले थे, राइटर काइंड ऑफ पीपल. तो उसको लगता है कि पैसे कमाने का बहुत ही अजीबो गरीब तरीका है. इन दिस पार्ट इतना ही. बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी लेसन्स स्टडी करेंगे.